Let's open up the floor, and I've seen few people raise their hands earlier who had questions, so we can take a few questions. आदरणीय मंच को प्रणाम करते हुए मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। मैं नमस्ते करता हूं। मेरा नाम अमर चौधरी है। विष्णु जी, सवाल का समय सही है क्या? मैं पूछ लूं? अच्छा, कविता मैम। अभी संतोष सर ने मैम कहा कि ये पुरुष प्रधान समाज है, तो एक पुरुष होने के नाते मेरा ये सवाल मंच पर उपस्थित सभी पुरुष प्रतिनिधियों से है। मनोज झा सर से, भूपेंद्र सर, संतोष सर, गुलाम सर, एस.टी. हसन साहब। मैं 40 सेकंड चाहूंगा मनोज सर इस सवाल को पूरा करने के लिए। मैं एक कंपनी के साथ काम करता हूं सर। वो एक प्रोडक्ट बनाती है एंटी एडिक्शन, यानी जिस प्रोडक्ट का यूज करके शराब या नशा छोड़ा जा सकता है। तो जब मैंने उनके बिजनेस के बारे में पता किया तो बिजनेस नहीं चल रहा। तो मैंने पूछा आप किसको अप्रोच करते हैं, किसको पिच करते हैं अपना प्रोडक्ट, समझाते किसको हैं? बोले उन पुरुषों को जो शराब पीते हैं, जो नशा करते हैं। तो मैंने कहा आपको लगता है कि जो नशा कर रहा है, नशे को एंजॉय कर रहा है, शराब पी रहा है, वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा क्या? तो बोले फिर हम क्या करें? मैंने कहा आप उनकी पत्नियों को क्यों नहीं समझाते जो उससे तंग है, परेशान है? आप उनकी माओं को क्यों नहीं समझाते? मैं ये कहना चाहता हूं सर, क्या पुरुष होने के नाते क्या हमें नहीं लगता कि महिला आरक्षण की जरूरत महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को है? कि आखिर ये महिलाएं हैं कौन? ये या तो मेरी मां है, या ये तो मेरी बहन है, या ये मेरी पत्नी है। और अगर मेरा आधा परिवार कमजोर है तो मेरा पूरा परिवार कैसे ताकतवर हो सकता है जब तक हम इस पे काम नहीं करेंगे? हमसे कहा जाता है कि पुरुष और महिला एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, और एक पहिए में अगर पंक्चर है तो दूसरा पहिया ये संतुष्ट होकर कैसे बैठ सकता है कि मुझ पे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आखिरकार सारा जोर उस पहिए पर ही आ जाएगा। तो मेरा सवाल सभी पुरुष प्रतिनिधियों से है कि पुरुष होने के नाते महिला समर्थन आरक्षण के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं और हमारी क्या भूमिका है? जी। संतोष जी को आपकी चेस्ट हिंदी समझ में नहीं आई होगी, तो मैं ये सवाल लेता हूँ। आ गया? हाँ, तो संतोष भी बोलेंगे। लेट मी टेल यू, एक आपने बड़ी अच्छी बात कही। एक तो आपका सवाल नहीं था, ये एक ऑब्जर्वेशन है जिसके पक्ष में हम हैं। लेकिन आपकी एक बात से मैं भी एक हास्य में हल्की बात कहूं। मैं विश्वविद्यालय में शिक्षक हूं। कई बार ऐसा होता है कि मेरी 80 की क्लासरूम होती है, देखता हूं कि 20 विद्यार्थी नहीं है। तो जो नहीं है भाषण उनको नहीं सुनना पड़ता है, जो 60 उपस्थित हैं उन्हीं को मैं कहता हूं कि यार अटेंडेंस इतना कम क्यों है, कहाँ चले गए वो लोग। तो ये दिक्कत है, ये जो आपने बात कही उसमें है। लेकिन सेंसिटाइजेशन जो एक चीज है उसकी पुरुषों को ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वो आधा हिस्सा आसमान का नहीं है, वो आधा हिस्सा हमारा है। थैंक यू। जितना हिंदी मुझे मालूम उतना हिंदी में बोलने के लिए कोशिश करूंगा। हमारी पार्टी का क्या पोजीशन है मैं इसके बारे में आपको बताया था, सभी को बताया था। सीपीआई ये जो बिल के लिए समर्थन देता हूं, लेकिन ये इंप्लीमेंट करने के लिए क्या सबसे बड़ा मामला क्या है? माइंडसेट है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अंदर मेल शोवनिस्टिक टेंडेंसीज है, इसको हटाना चाहिए। सो सीपीआई स्टैंड्स फॉर दिस, लेकिन पार्टी का अंदर एक रेवोल्यूशन होना चाहिए। बिना ये रेवोल्यूशन ये नहीं हो पाएगा। Good afternoon, all. My name is from GL Bajaj. My question is how What's your name? Pratyaksh. Pratyaksh. Yes, Okay. ma'am. My question is how this women reservation bill will help women working in education industry like college, schools, etc., and other industries. Ma'am, do you want to answer? How will this help women working in other industries? देखिए, मुझे लगता है जब तक ये रिजर्वेशन नहीं आएगा तब तक महिलाएं अपने आप को उतनी मजबूत नहीं समझ पाती हैं। मैं विमेन कमीशन में जब चेयरपर्सन रही हूँ, मैंने देखा है कि बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस से, बहुत फेमस जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ऐसे जगह पे टीचर्स की भी हालत अच्छी नहीं है। जो महिला शिक्षिकाएं हैं उन पर बहुत ज़्यादा शोषण कई जगह होता है और वो बता नहीं पाती क्योंकि वहाँ पुरुषों का वर्चस्व रहता है। तो मुझे लगता है कि वो खुलकर आगे आएंगी तभी जब उनमें पावर आएगा।
तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकली अगर वो मजबूत हो जाएंगी तो निश्चित रूप से हर फील्ड में उनको मजबूती से सामना करने की ताकत उनमें आएगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ये रिजर्वेशन बिल आए। We have one more question there. Good evening, ma'am. My name is Kirti. I am from IMS Ghaziabad University Courses campus. My question was for the panel that what does passing this women's reservation bill means for the LGBTQI community? Because as we are listening to the panel, most of the people remarked that there were only two genders, male and female. So what do you feel that how can we translate this into including the LGBTQI community as well? Because recently the center has shown some sort of restrictions for the LGBTQI community. Thank you. Today, the draft bill that we have given also talks about LGBTQ community, and it says that any gender, but specifically whoever identifies as women, should be also given the reservation. So that is a part of the bill. We are an open-minded society. India has always been an open-minded society. We believe that anybody who identifies as any particular gender should have a representation. So that is a part of the draft bill, at least that this panel has proposed. Now what comes to be the reality is a fight that we are all fighting, and we should continue to fight. Thank you. Okay, we'll have two more questions and then we'll continue with the panel discussion. A very good evening to all the honorable guests present here, all the honorable MPs. My question is to Honorable Rekha ji. Ma'am, like Priyanka ma'am said earlier, that women in states, they had to fight for their right to vote. And like you said, that you'll ask Honorable PM Modi ji whether he will pass this bill before the G20 summit in September or not. Do you think after passing the bill, there would be egoistical, toxic masculinity in men in the patriarchal society would increase violence in women, violence against women? Anybody wants to take the question? बोल रहे कि हाँ? See, the fundamental issue here, sorry, I didn't get your name. Ma'am, my name is Pratik Chahal and I am from IMS Ghaziabad. Pratik, thank you for asking the question. The Highly fight appreciate. today is to pass the bill. And to pass the bill itself, we are facing so many hurdles because it comes out of the hurdles are created by the mindset which comes out of a patriarchal system. But then yes, we need to make space, we need to forge ahead. So that is why so many parties have come together. And as you rightly said, there was this discussion कि it is like a chicken and egg problem. Because women are going out and working more, have the crimes on women increased? Or is it because women are more aware that they are reporting the crimes? So this has always been a question. But regardless of the fact, law and order also becomes a part and parcel of women being empowered as a whole. And political participation of women will give more voice to women. And if a crime is committed, it has to be reported. And what are the root causes of the crime? That has to be again looked into. But I do not believe that passing women reservation bill will directly have an implication on the crime, because we have done that in local bodies and we have not seen any such studies which suggested that. So doing that in the assemblies and parliaments, I believe will not have that kind of an effect. Thank you. Thank you, ma'am. We'll have one last question before we have our panel discussion. Hello everyone, myself Sarwan Kumar Kohri. I am from IMS Ghaziabad, journalism student. मैम, मेरा आपसे सवाल है कविता मैम से कि जब हम प्राइवेट बिल की बात करते हैं तो हमारी स्टेटिस्टिक उतनी अच्छी रही नहीं है. हमने लोकपाल मतलब हम लोगों ने ज़्यादा बिल पास किए नहीं हैं. जब बात अपोजिशन की आती है, जब किसी बिल के अपोज में आती है तो हम सोशली टीम इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे हमने सीएम फार्मर बिल में देखा. लेकिन जब बिल क्रिएट करने की बात आती है तो हमारे पास हमारे कम से कम स्टेटिस्टिक डाटा सपोर्ट नहीं करती. तो हाउ होपफुल यू आर फ्रॉम दिस मतलब बिल, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मतलब ऐसा क्या है जो इस बार बदलने वाला है, जो कि हमने देखा है कि 14-15 प्राइवेट बिल पास हुए हैं जिसमें से 2-3 ही पास हुए हैं आज तक के इतिहास में. देखिए, प्राइवेट मेंबर बिल किसी भी पार्टी इंट्रोड्यूस करती है, उसका एडवांटेज ये होता है कि प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करने के बाद, चर्चा होने के बाद सरकार को जवाब देना पड़ता है. तो जब सरकार जवाब देती है तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे वो कमिट कर रहे होते हैं कि अपना स्टैंड क्या है.
तो ये कमिटमेंट लगातार सत्ता पक्ष से लेने का एक एडवांटेज होता है कि उनका इश्यू के तरफ कितना कमिटमेंट है वो लोगों को पता चल जाता है, उससे एक पॉलिटिकल प्रेशर बनती है। जो नीड ऑफ द आवर है वुमेन रिजर्वेशन बिल, उसको पारित कराने में ऐसा लगातार गवर्नमेंट के तरफ से जो कमिटमेंट आता है, दैट विल बिल्ड अप द मोमेंटम। सो दैट इज द फंडामेंटल issue that why we requested the MPs today who are here to give a private member bill. हाँ जी। बेटा मैं कहना चाहूँगा कि आजकल पार्लियामेंट और राज्यसभा यस और नो पे चल रहा है। यस सर, यस यस वाले ज़्यादा हैं, नो वाले का कोई सुनने वाला नहीं है। मैं यही बात बोल रहा था सर कि जब ऐसी स्थिति है तो हम कैसे होप कर रहे हैं कि हम मतलब, चूंकि जाहिर सी बात है पॉलिटिकल, ये सोशल एस्पेक्ट भी है और पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है, और समहाउ हम जब मर्ज नहीं करेंगे तो इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम कैसे पास होने के, मतलब हमारे पास रीजंस क्या हैं जो हम सोच रहे हैं कि इस बार हम अचीव कर पाएंगे इससे? प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। कोई भी सरकार ये ऐसा इशू है जिसमें ना नहीं कह सकती है, अपने जाल में फंसने की स्थिति हो जाएगी। चाहे कोई प्राइवेट मेंबर बिल भी ये लाता है तो पास नहीं कराएंगे तो भी मरे, और ना करेंगे तो है ही स्थिति। इसलिए लाना बहुत जरूरी है कि सरकार के सामने 50% आबादी के सामने सरकार की स्थिति क्लियर होएगी कि वो वास्तव में चाहते क्या है। बिल्कुल, मैं भी आपसे सहमति रखती हूँ, क्योंकि ये सरकार हमेशा ये दिखाती है कि हम महिलाओं के हित में काम कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये मुद्दा सामने आएगा चुनाव के पहले, तो उनको लगेगा कि भाई हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि विमेन एम्पावरमेंट हमें चाहिए, हम उसके पक्ष में हैं, और दूसरी तरफ हम यही ना कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे जाएगी, और मुझे लगता है इस दबाव में कहीं ये पास हो जाए, ऐसी उम्मीद है हमें। बिल्कुल। हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे भाई? आपने अभी कहा कि हम ये कर कैसे पाएंगे और सरकार मानेगी या नहीं मानेगी। हम गुरनाम जी यहाँ बैठे हैं, राज्यपाल जी यहाँ बैठे, हम 13 महीने सड़क पे सोए थे तब मानी थी। इतनी बेशरम सरकार है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये नहीं मानेगी, ये हमें भी पता है। बट एटलीस्ट किसी ने स्टार्ट किया इस चीज को, इस चर्चा को। मैं ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आता हूँ, मैं हरियाणा से आता हूँ। अभी मनोज भाई बैठे थे जहाँ सरपंच पति की बात हो रही थी, सबसे ज्यादा हमारे यहीं होता है। एक स्टैंप होती है औरत अगर चुनाव जीत भी जाए तो हम वे औरतें जो वो सोच भी नहीं सकती कि दिल्ली में कोई बैठ करके उनके रिजर्वेशन के, उनके अधिकारों की बात करेगा भी, क्योंकि इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम इतना गर्त में चला गया है कि अगर मेरे बोलने से मेरी पार्टी को एक आधे वोट का नुकसान हो जाएगा तो मेरी पार्टी ताला लगा के घर पे बैठा देगी मुझे। तो मैं धन्यवाद दूंगा कविता दी का, जिन्होंने कम से कम ये चर्चा छेड़ी। आपने कहा स्टैट्स नहीं है, स्टैट्स भी आ जाएंगे, सरकार एक बार टेबल पे बैठ के चर्चा करे। मैं नहीं कह रहा हमारे पास 100% स्टैट्स होंगे, बहुत बड़ा भारत है, पर एक चीज आप समझ लीजिए, हम सब ये एक छोटा सा हिस्सा हैं। वे ग्रामीण औरतें जो 10-10, 12, 15 किलोमीटर पैदल एक पानी का घड़ा लेने जाती, वो असली भारत है। उनकी बात को टेबल पे लेकर के आना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। Thank you, Bhupendra Chaudhary ji. Well said. May I request Honorable MP Premachandran ji to have a few valuable words for this gathering. Thank you. Thank you very much. First of all, I take this opportunity to congratulate and appreciate Madam Kavitha ji for initiating this discussion and bringing this issue in the national political platform. The need of passing the Women's Reservation Bill, and really it is an appreciable thing Madam Kavitha ji has done, for which really she deserves congratulations, and I would like to place it on record. And the main focal issue to be discussed, I think, is, because it is very interesting in independent India, this is one of the very different legislation by which the entire political parties, whether it is the government or the opposition, all are unanimously supporting a particular bill, but it is not getting passed. There is really a contradiction which we are seeing in post-independent India. Because the government is interested in passing the bill, the opposition is also supporting it. Why it is being get passed? That is the issue to be discussed. So definitely
the political parties coming out for support of this bill should show the political will that should be exposed, for which definitely a bill has to be placed, introduced before the House, but unfortunately no bill is coming from the part of the government. Now most of the students who have asked the question regarding the private members bill, yes, we are having the right and there are chances of introducing the private member bill, and if it is, there is a luck, because it is by law, it is coming before the consideration of the House. When it comes, definitely it will be discussed, but at the same time, the political will of the government is highly essential to have it introduced in the House and to get it passed. Even the major political parties, almost all the political parties, you see the government as well as the opposition party led by Congress, even Congress, left parties, all BRS, all the political parties are supporting the bill, but not getting passed. It is really a contradiction and it is mocking the parliamentary democracy in our country. The will of the people is in favor of passing the Women's Reservation Bill, but quite unfortunate to say that the majority leading the political leadership is not willing to pass it in an indirect way. That is actually happening in our country. At the same time, I would like to add one more point, because the 73rd and 74th constitutional amendment, if you see, the Panchayati Raj system as well as the Nagarapalika system, so many powers which were vested with the state government were transferred to the local self-governments or the local bodies. And you may see after all these decades, not even a single power or a provision or authority which is being entrusted with the central government, union government, has not been transferred to the state government. This is the way by which the government, union government, is dealing in a federal democracy. We are always talking about the corporate federalism, all these things, but in practice it is not being seen. This is the thing now we are also seeing in the case of the Women Reservation Bill also. And the third point which I would like to make is regarding the political parties should also come out with their sincerity by showing that women should be given adequate representation in the elections, in parliament election as well as assembly election, so as to prove their bona fides in passing the Women's Reservation Bill. Then only it will get a momentum in the national political platform so as to get it considered and passed in the House. These are the observations which I would like to make. And we have received a very good research paper on the part of this Bharat Jagradai, and even a copy or a model private member bill, even questions, everything has been prepared. We are very thankful to the organizers, and definitely we will take up this matter. But at the same time, I would like to reiterate the political will of the political parties at the national level, in the parliament and outside, is highly essential. That is one of the requirement of this hour to get it passed. With these words, I conclude. Thank you very much. Any